हेलो वर्ल्ड, मैं हूँ चारवाक लोकायत। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं दूसरे एक चैनल पे लाइव में भी था और वहाँ पे मेरा किसी से थोड़ा बातचीत हो गया, टाइम हो गया इसलिए। बट एनी हाउ, मैं लाइव को अभी शुरू कर चुका हूँ और जो आज का टॉपिक है, रिलीजन, कल्चर, सुपरस्टिशन, जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देता है, वैज्ञानिक सोच को खत्म करता है और ये समाज का शोषण भी सबसे ज्यादा करता है। तो जो भी लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो धर्म, रिलीजन, संस्कृति, रूढ़िवाद के नाम पे जो भी परोसा जाता है और बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो है वो इसको परोसते भी है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको चाटते भी है और अपना दिमाग में गोबर भी भरा लेते हैं और विज्ञान को खत्म कर देते हैं और सोचना समझना बंद कर लेते हैं और मान लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे भावनाओं से मिलता जुलता है। तो सोचिए उस समाज का क्या होता होगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं सोचते कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, कुछ नया सोच लाए। नई सोच के बारे में चर्चा नहीं होता है। पुरानी सोच को हम नए सोच जैसा कैसे दिखाए या बनाए, ये होता है मेंटालिटी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे संस्कृति के नाम पे आपको बोला जाएगा कि भाई शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये बोल दिया जाता है कि गौमूत्र पी लो भाई। ठीक है, मैं तो पूछता हूँ ब्राह्मण का ही मूत्र क्यों नहीं पी लेते? ब्राह्मण तो देवता होता है, उसी का मूत्र पी लो। गाय का मूत्र क्यों पीना? शायद ज्ञानी बन जाओ ब्राह्मण की तरह। हिम्मत है तो कर लो भाई। तो यहाँ पे क्या बोलते, कल्चर, संस्कृति के नाम पे ये चीजें परोसी जाती है। और हर रिलीजन जो है उनका एक कॉमन थीम ये है कि हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, हमारे किताबों में विज्ञान है और आज जो मॉडर्न साइंस ढूंढ रहा है वो तो हमने पहले ही ढूंढ लिया था। अरे तुमने पहले ढूंढ लिया था इसलिए तो भारत इतना पीछे चला गया कि हम भी पीछे ही रह गए। कोई जो बोल रहा था कि भारत ने जीरो दे दिया जिसकी वजह से डिजिटल चल रहा है वर्ल्ड, मैं बोलता हूँ हाँ भाई, इंडिया जीरो ही रहेगा फिर। हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में जीरो ही रहेगा। जीरो दिया था ना, तो अब जीरो में ही रहो। आगे उसका आगे मत सोचो कि आगे क्या है। तो अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है हमारे समाज का कि लोग जो है पढ़ लिख लेते हैं लेकिन फिर भी वो मंदिरों में जाते हैं चढ़ावा देने के लिए। नौकरी मिल गई तो भाई ये नहीं सोचते कि मार्केट का कितना अच्छा कमाल था, कंपनी ने मौका दिया मेरे को, ये नहीं सोचते। जाते हैं शिरडी के मंदिर में जाने के लिए या तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाने के लिए। वहां जाके चढ़ावा देकर कहेंगे, बोलेंगे देखे प्रभु जी आपने मेरे को नौकरी दे दिया। भाई क्या बेवकूफी वाली बात है। और दुख की बात है, मेरे परिवार के ऐसे लोग हैं, मुझे दुख होता है ये सब सोच करके। तो ये हमारे समाज का अगर वायरस नहीं है तो क्या है? ये तो वायरस है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा तो एक वायरस है और ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। ये कभी सूडो साइंस का नाम लेता है, कभी सूडो हिस्ट्री का नाम लेता है, कभी कल्चर का नाम ले लेता है, कभी ये आपका फैमिली ट्रेडिशन का नाम ले लेता है, कभी ये आपका क्या बोलते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट का नाम ले लेता है। अरे कुछ भी हो, ये रिलीजियस सेंटिमेंट, साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, परंपरा, मान्यता, ये सब बस एक बहाने हैं। पाखंड को बनाए रखने के बहाने हैं ये सब, और कुछ नहीं है। ईश्वर तब कहाँ था? कौन सा भगवान था? जब आपका जोशीमठ डूब रहा है उत्तराखंड में, कौन सा ईश्वर है भाई? जोशीमठ डूब रहा है, कौन सा बद्री नारायण आ रहा है? कौन सा शिव है वहां पे? हाँ, जमीन ढस रहा है। सुनने में आया है कि जो अयोध्या की जमीन है वो भी धीरे धीरे ढस रही है और बना रहे वहां पे राम मंदिर। कौन भगवान है? भगवान है कि भगवान के नाम पे पैसा कमाना है? ये मेरे को जरा बताएं। भगवान तो नहीं हुआ इसका मतलब, भगवान के नाम पे पैसा कमाना है, बिजनेस। तो बिजनेस कहो ना,
बिजनेस कहने में शर्म क्यों आती है? धर्म को धर्म क्यों कह रहे हो? धर्म को बोलो कि हाँ ये बिजनेस से हम पैसा कमा रहे हैं, एक मार्केट है, हमारा कोई ईश्वर से भगवान से लेना देना नहीं है, हम जो उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच्चाई क्यों नहीं बोलते जितने गुरु हैं? ये हाल इस्लाम का भी है, ये हाल क्रिश्चियनिटी का भी है, बुद्धिज्म का भी है, सिखिज्म का भी है कहीं ना कहीं। वो क्यों नहीं आके बोलते कि भाई देखिए हम बस पैसा कमा रहे हैं इन इन व्यक्तियों के नाम पे, इन इन भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वगैरह वगैरह। तो ये मतलब बोल रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, झूठ क्यों बोलना भाई कि ये ऐसा कोई शक्ति होता है, ऐसा पावर होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, इससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा। इधर उधर की बात कर, सीधा सीधा बोलो ना, शर्म क्यों आती है बोलने में? मौलवी जो है बोले कि हाँ भाई हम जिहाद करने के लिए इस्लाम का प्रचार करते हैं, अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं होता, हमको बस वायलेंस करना है। मोहम्मद जो है एक काल्पनिक कैरेक्टर, उसके नाम पे हम ये जो है वो कर रहे हैं, फिरके बना के, 72 फिरके बना के 72 हुरों के लिए। बोल दीजिए ना, शर्म क्यों आती है बोलने में? यही बात क्रिश्चियनिटी से, जो ईसाइयत के जो फादर है उनसे पूछिए। बोले ना कि भाई हाँ जीसस नाम का कोई व्यक्ति था नहीं, जीसस था तो हम उसके नाम पे ये सब कर रहे हैं, हमको बस पैसा कमाना है, हमको यूरो में, फ्रैंक में, डॉलर में पैसे कमाने हैं, हमको तो बस पैसे से मतलब है। तुम हर संडे चर्च में आओ, थोड़ा दान दक्षिणा दो, उससे हमारा कमाई होता है, हम आपको लूट रहे हैं, हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हिम्मत करके तो बताए, दम है तो। नहीं बताएंगे, ये समस्या है। क्या बताएंगे? विज्ञान है, ये जो है वो सोसाइटी ऐसे है, ये कल्चर ऐसे है, वो हमारे साथ ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। अच्छा, यहाँ पे कोई गौरव दास लिख रहे हैं हमें अपने कल्चर की रक्षा करना है। कौन से कल्चर की? कल्चर तो कल्ट से बनता है। कल्चर जो है वो कल्ट से बनता है। बिहेवियर होता है, बिहेवियर रिपीटेडली डन हो जाता है हैबिट्स, हैबिट्स रिपीटेडली डन हो जाता है कल्ट। कल्ट जब वो फैल हो, स्प्रेड करने लगता है, जब कल्ट स्प्रेड करने लगता है ज्योग्राफिकल एरिया में, तो हो जाता है कल्चर। बात खत्म। ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होता है तो, और जब पूरे दुनिया में स्प्रेड होता है तो क्या हो जाता है? रिलीजन। जब पूरे दुनिया में स्प्रेड हो जाता है कल्चर, वो हो जाता है रिलीजन। बात खत्म। तो कल्चर में ही कल्ट शब्द छिपा हुआ है, ये इतनी सी समझने वाली बात है। कल्चर जो है आपको बता, पूछना, मैं पूछूंगा 2000 साल पहले जो कल्चर था क्या आज वो है? आज जो कल्चर है, आज से 2000 3000 साल बाद जो होगा क्या वो होगा? ऐसा का वैसा ही? बताइए। तो ये तो सोचने वाली बात हुई ना। 300 साल पहले जो प्रैक्टिसेस थे क्या आज वो है? और आज जो प्रैक्टिसेस है क्या 300 400 साल बाद वो प्रैक्टिसेस रहेंगे? सोचिए जरा। तो आप कल्चर जब बोलते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम के प्रैक्टिसेस को आप बचाना चाहते हैं? कौन से टाइम फ्रेम के? व्हाट टाइम फ्रेम, at what time frame the practices you want to propagate or protect? 2000 साल वाला, या आज से 300 400 साल वाला, या आज से 1000 साल वाला? कौन से टाइम का? ये मेरे को बताइए। सिद्ध राशिका लिख रहे, पर्सन टॉर्कस वेविंग बॉडी ब्लू रेज्ड आर्म, ओके। कौन सा कल्चर भाई? हाँ वही तो, वही तो जानना है कौन सा कल्चर है। देखिए, मोहम्मद जो था, सो कॉल्ड मोहम्मद, जिसके नाम पे माइथोलॉजी बनाई गई, वो एक ट्राइब से, वो कुछ लोगों के बिहेवियर से शुरू हुआ। वो बिहेवियर जो है हैबिट बन गया। हैबिट बन के जब वो एक पूरे ट्राइब को इन्फेक्ट कर गया तो क्या हो गया? कल्ट। और जब ये पूरा कल्ट जो पूरे अरेबियन पेनिनसुला को इन्फेक्ट कर गया, क्या हो गया? कल्चर। और जब ये पूरा कल्चर जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को इन्फेक्ट कर गया, आज का जो है एरिया, क्या हो गया? रिलीजन।
और उसका नाम क्या पड़ा? मोहम्मदनिज्म, इस्लाम। ये हो गया। वैदिक जो बोलते वो भी कुछ ऐसा था, कुछ ट्राइब का प्रैक्टिस हुआ करता था, बिहेवियर। और रिपीटेडली जब ये बिहेवियर होने लगा तो पूरे ट्राइब को इन्फेक्ट हुआ। पूरा ट्राइब इन्फेक्ट, कल्ट। एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में ये गया, ये जो मानसिकता है वर्ण का, जब गया तो क्या हो गया? कल्चर। और जब ये कल्चर भारत के बाहर जाने लगा है आज के टाइम में, तो ये हो गया रिलीजन। बात खत्म। तो मेसी लिख रहे, हेलो एवरीवन, हेलो मेसी। गौरव दास, कल्चर का रक्षा किससे करना है? वैसे तो सवाल वैलिड है, किससे करना है भाई? तो कल्चर को हिंदी में संस्कृति में क्यों ट्रांसलेट किया? ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी और से? देखिए, हिंदी में जो संस्कृति बोला जाता है ना, ये भी एक बाद का रिफाइनमेंट है। ओरिजिनल जो एक लैंग्वेज था 6th सेंचुरी के टाइम, प्राकृत था। प्राकृत को रिफाइन किया पाणिनि ने बहुत हद तक और बनाया आपका संस्कृत। उसके पहले जो भी सो कॉल्ड लैंग्वेज था उसको छंद बोलते हैं, छंदस बोलते हैं, मेट्रिक फॉर्म ऐसा वो होता है, जो कि एक अलग ही उसका एक प्रोनाउंसिएशन और तरीका होता है, बहुत फॉर्मल है उसका। ठीक है। तो संस्कृत जो है वो तो संस्कारित है। तो सवाल हमारे जो कल्चर है उसका नाम क्या होना चाहिए? प्राकृति होना चाहिए, फिर प्रकृति होना चाहिए। देखा जाए तो प्राकृत, प्रकृति। तो प्रेजेंट टाइम फ्रेम वाला, पिछले 100 साल वाला, विच अवर ग्रैंडफादर प्रैक्टिस। 100 साल पहले चलता तो वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है भाई। तो आज से 100 साल बाद जागे तो क्या रहेगा प्रैक्टिस? हो सकता है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, या पता नहीं चले कि कोई और फॉर्म में आ जाए। तो संस्कार और परंपरा, हाँ, तो संस्कार और परंपरा में तो यही तो बताया जाता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के पास मत जाओ, यज्ञ में यहाँ पे ऐसे नहीं खाते वैसे खाते हैं, ये नहीं छूते वैसे छूते हैं, उस बंदे को मत छुओ, इस बंदे को मत छुओ, इससे शादी मत करो, उससे शादी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इतने सारे 200-300 रूल रेगुलेशन डाल दिए। तो ये संस्कार और परंपरा से ही तो होता है, ये रूल रेगुलेशन। इसी को तो उठा के लोग वो बोल रहे हैं हिंदुइज्म। और जब ये चीजें फॉरेन कंट्री के लोग अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो हो जाता है रिलीजन। बात खत्म वहीं पे। तो वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन वाला फिल्म देख आए हो क्या भाई? गौरव दास, अच्छा। संस्कृति शब्द का मीनिंग के बारे में सवाल था। अच्छा, संस्कृति शब्द, संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति जो है वो होता है जिसे रिफाइन किया गया है। मतलब बिहेवियरल पैटर्न है, कुछ बिहेवियरल पैटर्न को रिफाइन करके उसको पेश किया गया है। संस्कृति, संस्कृति जिसको मतलब संशोधित किया गया हो उसको बोला जा रहा है संस्कृति यहाँ पे। ठीक है। और ये बिहेवियरल पैटर्न, और ये ज्यादातर बिहेवियरल पैटर्न कुछ नहीं, वर्ण, जाति, गोत्र वही है, घूम फिर करके वहीं पे आता है। कोई बोलेगा परंपरा या संस्कार, तो भाई गोत्र, वर्ण, जाति ही है, घूम फिर करके, सो कॉल्ड। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है जनरल कैटेगरी लोगों में ही। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्हीं में ज्यादा प्रेवलेंट है ये बातें, गोत्र, ये ओबीसी और सर्टन सेक्शंस ऑफ ओबीसी, और आपका क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी जिनको सवर्ण कहा जाता है, उनमें ही ज्यादा ये प्रभावित है। लेकिन उनके प्रैक्टिस, उनके बिलीफ सिस्टम को उठा के बोलना कि ये भारत का जो है वो है, ये भी तो गलत है ना। ये तो गलत हुआ फिर। भारत में तो ट्राइबल भी है, भारत में आपके बहुत सारे एथनिसिटी जिनमें गोत्र का कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही वर्ण का कुछ खास लेना देना है, ना ही जाति का। उसको लेकर के जिनका कुछ लेना देना नहीं है उन लोगों को बोल दिया अछूत, चलो निकलो समाज के बाहर।
ये कौन सी मानसिकता हुई फिर? ये तो सुपरस्टिशन हुआ ना। पढ़ा लिखा आदमी जो है वो अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर करता है, क्लियर करने के बाद शिव जी के मंदिर में जाकर दूध चढ़ाता है। और अब तो शिव मंदिर का ये हाल है कि दूध चढ़ा चढ़ा के, पानी चढ़ा चढ़ा के, चढ़ा चढ़ा के जो लिंग का जो पत्थर है वो सड़ रहा है, इरोड हो रहा है, इरोजन, इरोड हो रहा है ऑलरेडी। चढ़ा चढ़ा के, चढ़ा चढ़ा के, चढ़ा चढ़ा के इरोड हो रहा है। ये हाल है अब तो। ये तो सुपरस्टिशन है। कौन ईश्वर है, कौन भगवान, ऐसा तो कुछ है नहीं फिर। लोग बस झूठ प्रचार कर रहे हैं बिजनेस के लिए यहाँ पे। अगस्त मुनि की बैटरी पर आपका क्या? अरे भाई, वो जो किताब है वो किताब बहुत रिसेंट है, पिछले 50 साल में लिखा गया है, 50 या 100 साल के अंदर। वो जो भी सो कॉल्ड संहिता है या किताब है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो आपको जो बताया जाता है भारद्वाज का वो वैमानिक शास्त्र, ये तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में लिखा गया था। जो शास्त्री थे उनके उनके और उनके बेटे द्वारा, उनके बेटे का ही कहना है। आईआईएससी ने इसको डिबंक कर दिया है ऑलरेडी रिसर्च करके। ये तो बहुत 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की रचना है, 19th सेंचुरी के एंड या 20th सेंचुरी के बिगिनिंग का। तो कोई चीज संस्कृत में रिसेंटली लिख दे श्लोक बना के अपना खुद से, और बोल दे कि देखिए 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना है, तो भाई ये क्या मतलब हुआ? भविष्य पुराण को क्या आप मानोगे? उसमें क्वीन विक्टोरिया के बारे में बताया गया है, संडे मंडे ट्यूसडे बताया गया है। उसमें तो आपका वो शलीवाहन जो है, वो राजा जो कि जीसस को प्रणाम कर रहा है, जीसस का आशीर्वाद मांग रहा है, शलीवाहन। मोहम्मद को जो है वो शिव का भक्त बताया गया है। मोहम्मद जो है शिव का वरदान लेकर के पैदा हुआ था, राजा भोज को मूर्ख बनाने के लिए। भविष्य पुराण की बातें हैं ये, 19th सेंचुरी में लिखा जा रहा था। महाभारत की मजेदार बात ये देखिए, जब बोरी इंस्टीट्यूशन जब मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां इकट्ठे कर रहा था, तब भी महाभारत लिखना खत्म नहीं हुआ था, लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। बोला गया कि भाई और कितना लिखोगे, कभी तो खत्म कर डालो इसको लिखना। आज भी पड़े हुए हैं महाभारत के वो मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके बेसिस पे बिहार चोपड़ा का महाभारत पूरा बना टीवी में। अगस्त मुनि की बैटरी पर क्या विचार है? अगर आप ये पूछेंगे बैटरी, तो भाई मॉडर्न टाइम में बैटरी जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने कंट्रीब्यूट किया था, उसको एक्सपेरिमेंट करके। अगस्त मुनि ने बैटरी बना ली, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उनका रिकॉर्डिंग क्या था, ये तो पता चले। आज के टाइम में विज्ञान इस तरह से काम करता है, वैज्ञानिक सोच ये है आज के टाइम का। पुराने टाइम का वैज्ञानिक सोच कुछ अलग था। पुराने टाइम पे हम कुछ और यूज कर रहे होंगे, बैटरी थोड़ी था उस टाइम पे। उस टाइम पे तो भाई लोग जो है मोमबत्ती दिए जलाना या फिर वो करना, ज्यादा प्रथाएं थी उससे रिलेटेड। तो अब उससे अगर आप पूछेंगे अगस्त मुनि का बैटरी था, तो भाई मेरा ये सवाल है कि मेसोपोटामिया के कुछ लोग क्लेम करते कि उनको भी कुछ बैटरी मिल गया। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत आगे थे भाई, कि वो सबसे पहले दुनिया का बैटरी बना लिया फिर। तो फेस ब्लू वाइड आइज, ओके। उनका बहन जुलाई था क्या? अगस्त मुनि बैटरी से कुंडलिनी स्टिमुलेट करते थे। वो बैटरी कहाँ, हाँ ये बात तो सवाल है ना, बैटरी कहीं तो यूज होना चाहिए, क्या लगाया जाता है? हम आज के टाइम में बैटरी कहाँ यूज कर रहे हैं? मेनली गाड़ी में यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जैसे रिमोट कंट्रोल हो गया, फोन हो गया, वो सब हो गया, उसमें यूज हो रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। देर इन द पास्ट इफ दे हैव द बैटरी लाइक बल्ब फैन एक्सेट्रा। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें हाँ में हाँ मिला देंगे। रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा जो बोल रहे अरे वाह, ओ ओ माय, ओ ग्रेट, ही इज सो ग्रेट, ही क्रिएटेड रुद्राक्ष आउट ऑफ थिन एयर,
सो ग्रेट, वाओ। ये होते हैं कुछ ऐसे चंद यूट्यूबर, किसी को बिठा देते हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मुंडी हिलाते हैं, ठीक है। और वो बंदा जो है कुछ भी बक रहा होता है, काउंटर सवाल तो है नहीं, क्रिटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, वो हाथ इधर उधर घुमा रहा है और दिखा दे देखिए हमारे हाथ में रुद्राक्ष आ गया, और वो ताली बजा रहा है, भाई रुद्राक्ष आ गया, ये तो चमत्कार हो गया यार, गजब का चमत्कार है। कोई एनआरआई आता है, बोलता है भाई अमेरिका में आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, वहां पे तो सिविल वॉर चल रहा है। और फिर वो यही बंदा, सेम वही बंदा बोलता है कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा है, जबकि वो खुद एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से चलने वाले कंट्री में रहता है और बोल रहा है कि वहां पे आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, खुद इतना कंट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, जाके वो पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे, आप भी हंसेंगे, अद्भुत इनके बातें होते हैं। फोन पे बैकवॉश करने में भी बैटरी यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। वो कुछ साल पहले लड़की कैसे पटाया जाए इसके ऊपर वीडियो बनाता था। अच्छा। इस पॉडकास्ट इज बियॉन्ड साइंस। वो साइंस भी नहीं है, वो तो मैं सोचता हूँ कॉमेडी है। मुझे दया आती है उनके व्यूअर्स पे, दया, सही में बोलो तो दया आती है उनके व्यूअर्स पे। तुम्हारे सामने बंदा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और तुम पकड़ नहीं पा रहे उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। मैं तो लिख दिया कि भाई अगर डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ अच्छी बात है, तो भाई इंडियंस व्हाई डोंट दे गो एंड लिव इन नॉर्थ कोरिया, व्हाई डोंट दे गो एंड लिव इन चाइना, चाइना में या नॉर्थ कोरिया में चले जाए या म्यांमार में चले जाए, अगर स्ट्रांग लीडरशिप इतना ही अच्छा है तो वहां पे क्यों नहीं जाते। तो ये भाई बड़ा अद्भुत इनके रिएक्शंस होते हैं। सी नोलन इंस्पायर्ड बाय गीता, एंट्रोपी चेंज ऑलरेडी मेंशन्ड इन गीता। आप, मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, थर्मोडायनामिक्स के जो फाउंडिंग फादर है वो कौन थे, जरा ये बता दो यार। मतलब मैकेनिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के जो मॉडर्न जो एक फादर है वो तो न्यूटन हुए, थर्मोडायनामिक्स के जो फादर है उनका नाम अगर सही से याद करता हूं तो वो केल्विन है, केल्विन। ठीक है, कम से कम केल्विन या जूल जो है उनका नाम मत बदनाम कीजिए, आप उनसे जरा पढ़ लीजिए कि भाई वो क्या गीता पढ़कर वो एंट्रोपी के बारे में बता दिए थे, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप अगर कॉन्फर्मेशनल बयास कर रहे हैं तो आपको गीता में छोड़िए, आपको तो भाई मोबाइल फोन में भी दिख जाएगा कि गीता ने मोबाइल फोन के बारे में भी लिखा है, अगर आपको गीता से मोबाइल फोन ढूंढना है तो आप वो भी ढूंढ लोगे। ये होता है कॉन्फर्मेशन बयास। और जो लोग एंट्रोपी को ढूंढते हैं गीता में, वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं, वो अब हार मान लिए कि भाई साइंस इज सुपर, बिना साइंस के आज का टाइम नहीं चलता। धर्म, धंधा, सुपरस्टिशन, कल्चर नहीं चल सकता। तो ये अपने आप में हार मानने वाली बात हुई। बिना साइंस को इन्वॉल्व किए आप अपने बारे में बात करो ना, लॉजिकली बात रखो, एक अच्छी बातें रखो, तब ना मजा आएगा। लेकिन नहीं, आपको साइंस घुसाना है तो भाई यहीं पे हार गए आप। इसका मतलब आप खुद अंदर से मान रहे हैं कि भाई साइंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब साइंस के बारे में बताएंगे तभी मैं थोड़ा अपना प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, सूडो साइंस, सूडो हिस्ट्री फैला सकता हूँ। जब तक मैं क्वांटम डायमेंशन ये वर्ड्स यूज नहीं करूंगा तब तक लोग मेरी बातें नहीं सुनेंगे। ये आप हार मान ले, इसका मतलब यहीं पे। अभिजीत, हाँ मैं समझ गया वो कौन है, मुझे और आगे बोलने की नहीं है। Heard Nolan showed Oppenheimer reading Gita during sex.
तो भाई भक्तों से बोलना कि भाई एटम बम जो गिरा था हिरोशिमा नागासाकी, इट वाज इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता। क्योंकि एटम बम बनाने वाले को तो बोलते हैं ना गीता से इंस्पायर्ड, तो ताली बजाते। तो ये भी मानो कि हिरोशिमा नागासाकी में जितने लोग मरे थे वो भी भगवत गीता की वजह से मरे हैं भाई। तो भगवत गीता के ऊपर भी जेनोसाइड या खून लगा हुआ है भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फेसबुक में जो पोस्ट करते रहते हैं तो उनके लिए है। बुद्धि बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा। अच्छा गौरव दास। जूल्स, आई स्टडीड इंजीनियरिंग थर्मो। I am time the mighty destroyer. I am here to annihilate all these people even without air. No one were. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो कभी कभी अजीब लगता है कि महाभारत में जो गीता घुसाया या गीता लिख रहा था उसको पता नहीं था क्या कि युद्ध होने वाला है, युद्ध में ऐसी बातें नहीं की जा सकती कि मैंने सबको पहले ही मार दिया है। ये नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है बेटा तुम युद्ध करो, भागो मत। सीधा सीधा बोल के बात खत्म करते हैं। कहाँ आत्मा, कहाँ पुनर्जन्म, परमात्मा परमात्मा, भक्ति वक्ति शक्ति, पता नहीं इधर उधर घुमा रहे हो। 18 अध्याय करके घुमा रहे हो। हाँ, सोच रहा 18 अध्याय का जो श्लोक सुन रहा था अर्जुन, इमेजिन करिए कितना टाइम लगा होगा। दुर्योधन तो आके मार ही दिया होता अब तक। इतना अजीब लगता है सुन करके। कल नया कुछ डिस्कवर होगा, संगी मुसंगी। लोग जाएंगे बताने ये हमारे बुक पे था। मेरे पास अभी एक पैम्पलेट आया है, और ये पैम्पलेट और कोई नहीं, कोई बंदा है जो एक टॉप कंपनी में काम करता है, वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मेरे को शेयर किया। बोल रहा था आप भी शेयर करो, वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर हिस्ट्री। बोल रहा था महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और जो शिवाजी है वो हमारे हीरो है। बाबर, अकबर, औरंगजेब जो है वो हमारे इन्वेडर है। पार्टली ठीक है ये बात, पार्टली ट्रू है, पार्टली ठीक है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम खास नहीं है। हाँ, ये बड़ा अजीब बात है कि उसके पैम्पलेट जो बुक है, एक जगह लिख दिया एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स। टेम्पल में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के कार्विंग मिल गए। टेम्पल में जो क्या बोलते हैं मिसाइल्स, राम जो है मिसाइल शूट कर रहे हैं रावण के ऊपर, वो मिल गया। अद्भुत है। मैं तो सोच रहा कभी इस पे वीडियो बना के थोड़ा डिबंक करूं, कम से कम। मेरे को तो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, उसको पता भी नहीं था किसको ये तुम कंटेंट दे रहे हो। तो मैं तो सोच रहा अपने चैनल में वीडियो बना के थोड़ा सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप ही बढ़ा लो उसके जरिए। which are claiming it might help। ये जो कि आप ये जो बोल रही है चैप्टर 11 का वर्स 31 है। चैप्टर 11 भगवत गीता का वर्स 31 और 32, वहां आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। हाँ 11:32 वही। सो व्हाई डोंट यू। वही। तो ये तो गीता को अगर कोई मानेगा तो स्टालिन भी निर्दोष, हिटलर भी निर्दोष, माओसेतुंग भी निर्दोष, पोल पॉट भी निर्दोष, मुसोलिनी भी निर्दोष, दुनिया के सारे डिक्टेटर निर्दोष, गीता को अगर लिटरली सही मान लिया जाए तो। He just need the push। अर्जुन, भाई अर्जुन कोई इनविंसिबल नहीं था, महाभारत के लेखक ने उसे इनविंसिबल बनाया है। ठीक है। महाभारत के लेखक ने बनाया है। अगर एकलव्य का वो अंगूठा नहीं खटा होता ना, अर्जुन का करियर खत्म, कब का खत्म अर्जुन का। एकलव्य का अंगूठा ले लिया भाई। पुष्पक रथ में गए था या फिर हुलूमान के पीठ पे चढ़कर? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मेरे, अगर आपने देखा होगा आज का थंबनेल में, रिलीजन लोग खड़ा हुआ एक साइंटिस्ट के पीछे। साइंटिस्ट बेचारा मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पीछे रिलीजियस लोग कुछ नहीं कर रहा है, वो बस खड़ा होकर देख रहा है, वेट कर रहा है कि कब ये कुछ इन्वेंट करेगा और हम अपने किताबों में उसको दिखाएंगे।
रिलीजन किताबों में। तो यहीं पे कहीं ना कहीं रिलीजियस लोगों की हार है कि आज के टाइम में साइंटिस्ट जो काम करता है, जिस तरीके से अप्रोच करता है सब्जेक्ट को, वो यूनिवर्सल है और वो समाज को आगे बढ़ाता है। वो चीज, वो मेथोडोलॉजी वो होना चाहिए फिर। अर्जुन लॉस्ट ए वॉर विथ बब्रुवाहन। हाँ, बब्रुवाहन उसको मार दिया था, वो उसका बेटा था, मार दिया था अपने ही बाप को। आई एम आस्किंग हिम फॉर हिज सोर्सेस। सोर्सेस तो उसने बता दिया, चैप्टर 11 वर्स 32, तो आप देख लेना, वही होगा। ये भी एक हाइपोथेसिस है ही है, एकलव्य वाली बात। जो भी हो, लेकिन एक चीज तो दिखता है, कूट कूट के भरा हुआ है हायरार्किकल डिफरेंशिएशन। सूत पुत्र है, किसी को सूत पुत्र मान लिया गया समाज में, तो उससे आगे मत बढ़ने दो, उसको साइड में रख दो। किसी को निषाद वंशी मान लिया गया, वो टैलेंटेड हो या कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आगे मत बढ़ने दो, उसको साइड में रख दो। ठीक है। दासी पुत्र है, तो भाई उसको सीधा सीधा, वो भले ही कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसको राजा मत बनाओ, उसको राज्य के बाहर रखो, मंत्री तक सीमित रख लो। ये है महाभारत, यही जातिवाद सिखाता है आपको घूम फिर करके। ठीक है। और अर्जुन ने क्या आचार्य द्रोण का विरोध किया था जब एकलव्य का हाथ काटा जा रहा था? अर्जुन ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए था अर्जुन को, युधिष्ठिर को। तो इसका मतलब अर्जुन युधिष्ठिर, जो सो कॉल्ड पांडव थे कहानी में, वो मान रहे थे हाँ ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ये हमसे भिन्न है, इनको अधिकार नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कभी धृतराष्ट्र को बोला कि भाई आप जो है पहले विदुर को राजा बना लीजिए, विदुर के मरने के बाद मैं राजा बनूंगा? युधिष्ठिर में क्या इतनी धर्म सो कॉल्ड इक्वालिटी और समानता थी, समानता के विचार थे, रैशनैलिटी? युधिष्ठिर में रैशनैलिटी नहीं था। दुर्योधन रैशनल था यहाँ इस मुद्दे पे। उसने ये नहीं देखा कि कर्ण किसका पुत्र है किसका पुत्र नहीं है, बोला तू टैलेंटेड है, तेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मुझे चाहिए अर्जुन से लड़ने के लिए कोई बंदा, आ जाओ मेरे साइड में। ये इतना दिमाग उसमें, इतना था अकल दुर्योधन का। तो मैंने सुना है चंद्रयान का, अरे कुछ दिन बाद देखना, इसरो खत्म हो जाएगा, इसरो की जगह होगा मठ। बोलेंगे ये मठ से निकलता था यान, पुष्पक यान, ये विमान निकलता था, बोल देंगे। साइंटिस्ट लोग संस्कृत रट रहे होंगे, बोल रहे हैं कि भैया हमने मंत्र पढ़ करके रॉकेट को ऊपर बेच दिया। रॉकेट भी नहीं बोलेंगे, विमान को बोल देंगे, हमने विमान को बेच दिया चंद्रमा को, ये बोल देंगे। वेट करिए कुछ दिन और, कुछ साल और, ये भी होने वाला है, ये दिन भी आएंगे। अपना में, अच्छा जेम्स कैमरून, ठीक है, काम करते हैं हम, भारत में एक मूवी बनाते हैं रामायण, और उसमें राम को हम वैसे ही दिखाते हैं जैसे वो अवतार का कैरेक्टर है, लक्ष्य, और सीता को वैसे ही दिखाते हैं जिसमें वो फीमेल को दिखाया गया है, लीड को अवतार में, और बोल देते हैं कि रामायण है, लीजिए। फिर देखते हैं कि बॉलीवुड वाले, जो जो यहाँ इंडियन लोग हैं ना, बड़े चिल्लाते, क्रिएटिविटी नहीं है बॉलीवुड में, देखते हैं एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। वहां पर तो बड़े खुश होते हैं कि अरे हाँ राम से इंस्पायर होकर के एलियन कैरेक्टर बना दिया। यहाँ के राम को एलियन जैसा दिखा दो भाई, फिर बोलो देखो भाई हमने रामायण बना है, ये 21st सेंचुरी रामायण है, एंजॉय। आदि पुरुष सहन नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए, तो तुम टॉलरेट कर लोगे राम को अगर एलियन में दिखा देंगे तो, जैसे अवतार में दिखाया गया है। हम्म। तो कृष्ण को बोलना था डेमोक्रेसी फॉलो करो, लोग इलेक्ट करेंगे। मैं तो बोलता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना लेते कम से कम। मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था, 9,000 साल पहले इंटरनेट था, तो व्हाट्सएप भी होगा उस टाइम पे, व्हाट्सएप में ही लड़के डिसाइड कर लेते भाई किसका राज्य किसके हाथ में होगा।
Also an I agree, a lot of discrimination in Mahabharata Shambhuk story is also an example. हाँ, शंभुक स्टोरी तो महाभारत में रिपीट होता है, हरिवंश पुराण में रिपीट होता है, रामायण में रिपीट होता है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। तो फिक्शनल मूवी टाइप एंजॉय करो वो सब स्टोरीज को। हाँ, स्टोरीज और स्टोरीज को स्टोरीज की तरह देखो यार। आप उसको इतिहास बना के सेंटिमेंट क्यों हो रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब तक। सेंटिमेंट देश को कहाँ ले जा रहा है? तो मेरे चैनल में डिबेट करने तो कोई आते हैं नहीं, और आते भी है तो डर लगता है उनको। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं भाई। आए ना मेरे चैनल में डिबेट करने। वो व्हाट्सएप पर नहीं, गूगल क्लाउड पे ही डिसाइड कर लेते हैं। ये बात भी सही है। गूगल क्लाउड पे ही कर लेते हैं, हाँ, वो ज्यादा बेटर होता है। राम को एलियन जैसा दिखा दो भाई, विथ लॉजिक, रेवोल्यूशनरी आइडिया वो। अब जब जेम्स कैमरून एलियन कैरेक्टर को राम के जैसा दिखा सकता है, तो राम को एलियन जैसा दिखा दो, बात खत्म। तो यहीं से पता चल जाएगा, पब्लिक रिएक्शन देख लो। वेस्ट में तो भाई पब्लिक को घंटा फर्क पड़ता है, वो बस मूवी देखने जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ की पब्लिक जो है वो तो देखना चाहती है सेंटिमेंट है कि नहीं है भाई। सेंटिमेंट का बाजार खोल रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे असली मुखौटा यहाँ पे गिरेगा ना, जब ऐसा होगा तो भारत में। व्हाट्सएप में ही तो खबर आता था संजय को, हाँ। बिल्कुल। थोड़ा अच्छे से पढ़िए महाभारत। 7th स्टैंडर्ड में महाभारत सब्जेक्ट हुआ करता था मेरे स्कूल में, हिंदी हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। उसके लिए एग्जाम लिखना पड़ता था। 7th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और तब कोई एनडीए सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। ठीक है, समझ जाना मैं कब की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम मनमोहन सिंह ही थे भाई। तो भाई उनकी सरकार के टाइम में मैं भारत पढ़ रहा था यार। 6th स्टैंडर्ड में रामायण पढ़ रहा था हिंदी में। 7th स्टैंडर्ड में महाभारत पढ़ रहा था हिंदी में। एग्जाम भी दे रहा था भाई उसके लिए। तो तो मुझे समझ में आता है भाई महाभारत क्या है। मेरे घर में सी राजगोपालचारी का रामायण लिखा हुआ संक्षिप्त भी है, और महाभारत भी है, दोनों है। तो मेसी लिख रहे गौरव दास ऊपर जो, हाँ भाई आ जाओ भाई, जिनको भी आकर डिबेट करना है, संस्कृति सुपरस्टिशन बचाना है, वो आए भाई। तो भाई यहाँ पे तांत्रिक लोग भी, किसके तांत्रिक हो, बाबा हो, ओझा हो, आयुर्वेद हो, वास्तु हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं ज्योतिष हो, ये आपका सुपर नेचुरल क्लेम से ही तो चलता है। पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, इसके नाम पे ही तो चलता है। तो जब कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म ही बकवास है, तो इन सब को मानने का क्या मतलब? इन सब को मानने का पूरा बकवास हो जाता है। तो नहीं, क्यों दिखा दो, मजाक बनाना है। वॉट एवर मॉडर्न साइंस सो फॉर अवर साइंस डिस्कवर इट लॉन्ग टाइम अगो। ये घमंड हमको ले डूबेगा भैया। आपने शायद सेपियंस किताब नहीं पढ़ा है कि वेस्ट लोगों ने दुनिया को क्यों जीता। अगर वेस्ट में भी यही सोच चल रहा था कि भाई बाइबल में ऑलरेडी हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमें फर्क क्या पड़ेगा, करने की क्या जरूरत। जो चर्च बोल रहा है कान में सुन लो और चलो। यूरोप का क्या हाल होता, यूरोप कहाँ होता आज। जबकि उन्होंने बोला भाई बाइबल में क्या लिखा है हमें नहीं पता, बकवास होगा। चर्च बोल रहे इसकी बात को सुनो ही मत। हमको नहीं पता दुनिया क्या है, हमको दुनिया का छानबीन करना है। तो वो निकल पड़े एक्सप्लोरेशन करने। पहुंच गए साउथ अमेरिका, पहुंच गए इंडोनेशिया, पहुंच गए आपके अफ्रीका, इंडिया वगैरह वगैरह। और वहां से उन्होंने सीखा कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और कॉलोनाइजेशन यहीं से शुरू हुआ। दुनिया ने जीत लिया इस बात को सोच करके हमें कुछ नहीं पता, चलो दुनिया घूम के देखते हैं, क्या पता कर सकते हैं, क्या हम
पावर ले सकते हैं। सोच लीजिए, सोचते रहना ऐसा ही कि भाई हमारे में सब कुछ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तब। हेलो हेड्रियन। हेलो रक्षित, कैसे हैं आप? अरे हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत दिन बाद आप आए हो, आई थिंक बिजी थे। हाँ हाँ, मैं अभी भी काम पे ही हूँ। मैं लाइव स्ट्रीम में इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपसे इसलिए इतने टाइम से बात नहीं हुई क्योंकि आप जहाँ पे हम लोग बातें करते थे वहां पे आप एक्टिव नहीं हैं अभी। तो आज आपका स्ट्रीम मिल गया तो मैसी ने भेजा वो था वो लिंक, तो मैं वो ज्वाइन वो कर गया। वो इसलिए है जो इंडिया के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा वो एक्टिव होते हैं यूट्यूब में और व्हाट्सएप हाँ में। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सेंस बनता है यार। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ टुन्नी आए थे, आके बोल के जा रहे हैं कि सारे साइंस लिखे हुए हैं महाभारत में और पता नहीं कहाँ पे। ये मैडम जी बोल रहे हैं कि हम साइंस सिखाते हैं। हम साइंस सिखाते थोड़ी है, हम तो आर्गुमेंट बता रहे हैं कि आर्गुमेंट से सोचो। अच्छा, एक मेरा एक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब ये लोग बोलते हैं ना कि कोई भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कि हमारे बुक्स में या स्क्रिप्चर्स में पहले से ये सब कुछ प्रिडिक्टेड है, तो मैं ये उनको समझाना चाहता हूँ, खास करके क्योंकि आज का स्ट्रीम टुन्नियों के ऊपर है, कि तुम लोगों को ये नहीं लगता कि तुम लोग लिटरली वही डिस्कवर कर रहे हो जो बाकी साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। तुम लोगों को, जैसे तुम लोग बोलते हो कि तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल आईपैड डिस्कवर किया था, ओ भाई तुम लोगों को तो फिर इसीलिए पता है क्योंकि आईपैड तो वेस्ट वेस्ट में इन्वेंट हुआ है। तो तुम लोग अपनी साइंस पढ़ के तुम हमें कुछ ऐसा इन्वेंशन दिखाओ जो तुम्हारे पास वो इन्वेंशन थी, जो आज हमारे पास नहीं है। और वो अरे लॉ हेड्रियन ऑफ हेड्रियन ग्रेविटी, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि देखो हनुमान तो बिना पंखे का उड़ान मारता था, देखो क्या टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं, जो साइंटिफिक लॉ को नहीं ब्रेक करता है और तुम्हारे पास वो इन्वेंशन पहले थी, तुम वो अपने स्क्रिप्चर से निकाल के बताओ, तो तब जाके मैं पर्सनली मानूंगा कि हाँ तुम लोगों के पास कुछ ना कुछ साइंस थी पहले। ऐसा नहीं कि अभी आज हम लोग जो इन्वेंट कर रहे हैं तुम उसी को पकड़ के आके बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो हमने बहुत पहले इन्वेंट कर दिया था, ये तो तुम लोग फिर छाप रहे हो। मैं एक यहाँ यहाँ पे ये अजीब बात की है, मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है यार, जब मॉडर्न साइंस सब कुछ खोज लेता है उसके बाद तुम क्लेम करते हो कि देखो हमारे मंदिर में ये था, हमारे उपनिषद में ये था, हमारे स्क्रिप्चर में ये था। पहले क्यों नहीं नहीं बोलते भाई? नहीं नहीं, इसका नहीं नहीं रक्षित, चलो मान लेते हैं कि इन टुन्नियों की बात मान लेते हैं कि उनके पास था, तो इसका मतलब कि उनके पास तो फिर और भी साइंसेस होंगी जो अभी हमारे पास नहीं है। तो तुम वो जो और भी जो साइंसेस हैं ना, तुम वो सामने लाओ और फिर हम उसी पे बेस्ड करके इन्वेंट करते हैं जो, और हाँ। मतलब समझ आ रहा है, लाइक तुम लोग ये करके दिखाओ। वही 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 वही, आई अग्री एब्सोल्युटली। ये यू नो व्हाट, इसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मैंने बोला ना, कल को अगर ये टॉयलेट का वो मशीन भी दिखाना चाहते तो गीता में दिखा लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये कुछ भी दिखाना हो, वेस्टर्न टॉयलेट भी दिखाना है तो वो दिखा देंगे। ये भी। अच्छा कहाँ चले गए एड्रियन? एड्रियन कहाँ है? ओके चलिए, ये जब जुड़ते हैं तो मैं इनको ऐड कर लूंगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इनको कुछ भी दिखाना है वेस्टर्न तो वो दिखा देंगे, और हमेशा कंपेयर करेंगे वेस्ट से। अपने मंदिर को कभी कंपेयर नहीं करेंगे बुर्ज खलीफा से, कभी कंपेयर नहीं करेंगे ट्विन टावर से, ठीक है, या सीयर्स टावर से, या वो उन चीजों से। ये हमेशा वेस्ट से कवर करता है। और मैं बोल रहा था, मेरा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, उसने मेरे को एक पोस्ट भेजा था। वो भेजा था एंशंट टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में हमने बनाया था एंशंट, वो पिक्चर भेजा गोल्ड का। थोड़ा रिवर्स इमेज सर्च करके पता चला ये लंदन म्यूजियम का है, 18th सेंचुरी का। वहां के एक ट्रैवलर ने वो रखा था म्यूजियम में, ये नहीं उसका एक है। और नहीं एक और हेलो रक्षित, आवाज, हाँ हाँ सॉरी। हाँ नहीं हाँ, एक अरे और अरे। चीज है कि टेलीस्कोप, ये बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि देखो हमने प्लैनेट्स और टेलीस्कोप डिस्कवर किया है। तो अरे भाई, तो तुम लोग, ये टेलीस्कोप तो बहुत पहले से आ रहा है, तो तुम लोगों ने, अच्छा तुम लोगों ने
टेलीस्कोप डिस्कवर किया, और तुम लोगों ने अगर तुम कुछ प्लैनेट्स या जो भी स्टार्स का नाम लिया जो कि नजर आ जाता है, यू नो, आप तुम्हारे उसी टेलीस्कोप से तुम लोगों को केपलर 185 नजर आया था, तुम लोगों का उसी टेलीस्कोप चलो केपलर 185 तो और भी दूर पे है। तुम मुझे ये जो जाने माने तारे जो हैं या स्टार्स जो हैं जो हमें बेसिक टेलीस्कोप से भी नजर आ जाता है, तुम उसको छोड़ के हमारे ही मिल्की वे में कोई दूसरा एक और अर्थ लाइक प्लैनेट केपलर 286 या फिर नाम नंबर भूल गया, केपलर अब पता नहीं, कोई केपलर एक और है मिल्की वे में। बहुत सारे नाम होते हैं आजकल तो डायरेक्ट नंबर में लिख देते हैं वो। हाँ ठीक है, तुम, ये भी है। हाँ, अच्छा बता भी उसी 6-7 प्लैनेट्स के बारे में जिनको ना हम लोग नेकेड आई से भी उनका लाइट नजर आ जाता है ना, मतलब रह के, तो तुम्हारे टेलीस्कोप, ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जिससे तुम्हें वही इंफॉर्मेशन मिली जिसके बगैर भी तुम्हें नेकेड आई से भी तुम्हें वही इंफॉर्मेशन मिलनी थी? क्या उठा लिया तुम लोगों ने? ओ मैन, और आप, ये लोग लिटरली मानता है, और ऑफिस का वो बंदा बोलता है अरे देखो भाई, हमारा कल्चर बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत कुछ था, कॉलोनियलाइजेशन की वजह से हमारा देश बर्बाद हो गया है, देखो। खुद जो है वो इंग्लिश यूज कर रहा है, खुद जो है व्हाट्सएप यूज कर रहा है, खुद जो है वो फेसबुक और यूट्यूब यूज कर रहा है, ये सब बताने के लिए। अच्छा, ये जो बोलते हैं ना ये जो बोलते हैं ना कॉलोनाइजेशन की, कॉलोनाइजर्स आके सब करप्ट करके चोरी करके लेकर गए, इनको इनको हिस्ट्री का पता नहीं, कुछ समझ है या नहीं। अगर कॉलोन क्या बोलते हैं, अगर कॉलोनाइजर्स आके चोरी करके लेकर गए, तो इसका मतलब तुम दोनों के पास ना पैरेलली एक साइंटिफिक टेम्परमेंट या फिर कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी नजर आ जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आइबेरिया में जब मुसलमानों ने जब कब्जा किया था इन्वेजन्स करके या जो भी बहुत कुछ खून खराबा करके, तो उन्होंने जाके जब इस्लामिक गोल्डन एज जो जिसको कहा जाता है, वहां पे इस्लामिक गोल्डन एज आया इसीलिए क्योंकि उन्होंने यूरोप और फिर दूसरी रीजन्स के जो नॉलेज थे ना वो पकड़ पकड़ के अपने अंदर लेकर आ गए। तो इसी तो वहां पे तुम कह सकते हो कि अबे हाँ, इन्होंने तो फिर कॉलोनाइज करके निकाला है, या ये जो इब्न रुश्द या इब्न सीना ने जो लिखा उन्होंने, वो तुम वहां पे जाके तुम कह सकते हो कि कॉलोनाइजेशन चोरी किया है, क्योंकि और ये सेंस भी बनता है। लेकिन अभी ये जो मुन्नी और टुन्नी दोनों ही कहते हैं कि यार हमारे यहाँ पर आके कॉलोनाइज करके हमारे से हमारे खुद का आईपैड का आइडिया चोरी कर लिया। अबे जा बे भाई अच्छा, तो फिर आईपैड तुम्हारा इंडिया में है या पाकिस्तान में क्यों नहीं बना पहले? हाँ, और ऐसी चीज है कि, और यार ये आईपैड भी कोई छोटी मामूली सी चीज थोड़ी है। ये साइंटिफिक जितने भी ये लोग बात करते हैं ना, बोलते ऐसे कि जैसे कोई, ऐसे ही हमने जान लिया, ऐसे ही है बस। नहीं भाई नहीं, बात उसका भी थ्योरी है ना, मैं बताता हूँ ना, तो उनको पता है कैसे वो कैसे जान लिया। उनके जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने बैठ के तपस्या करके ये जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस नहीं होते हैं जो पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक करता है, फिर ये तपस्या करके वो वाइब्रेशंस को सुन सुन के उनको उनको नॉलेज मिला, फिर वही नॉलेज उन्होंने फिर लिख दिया। तो मेरे को एक और बात समझा, तो फिर साइंटिफिक स्टडीज करने की क्या जरूरत है भाई? तुम तपस्या करके वाइब्रेशन से इन्वेंशन करो ना फिर जाके। एक यूट्यूब चैनल दिखा रहा था, हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां है ना, वो मूर्तियां यानी पत्थर नहीं है, वो लिविंग थिंग्स है, डीएनए है उनमें, दे आर लिविंग लाइक अस, डीएनए टेक्नोलॉजी है वो। यार अब क्या, मैं मैं सोच रहा था चलो हाँ कमेंट करूं, बट मैंने सोचा यार बेचारे का मतलब दिल दुख जाएगा। अबे नहीं तो कमेंट कर देना चाहिए था, इनका दिल दिखाना ही चाहिए यार, ऐसा भी कोई दिल होता है यार? इनका, अरे कैसे कैसे लोग हैं यार।
हमारे देश में वी आर वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू हंगर इंडेक्स, लेकिन हम दूध को नदी में बहा देते हैं, पानी को नदी में बहा देते हैं। जो पानी हमें पीना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, वो हम एक पत्थर की मूर्ति शिवलिंग के ऊपर बहा देते हैं। और अद्भुत बात यह है कि वो शिवलिंग में भी इरोजन हो रहा है, पत्थर में भी इरोजन डाल डाल के, इतने सालों से आ रहे हैं, लाखों लोगों में करोड़ों लोग डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के क्या हो गया, पूरा जो शिवलिंग है वो घटता जा रहा है, सिकुड़ रहा है एकदम। तुमने उनको ये शिवलिंग बोल को भी नहीं छोड़ा, नहीं नहीं शिवलिंग उनको को भगवान बना बना के तुमने शिवलिंग को ही खत्म कर दिया तुमने। हाँ, नहीं और नहीं फिर नहीं आके रक्षित, चिल्लाते इसका एक और, मुसलमान ये कि मुसलमान इसका वो एक कि। फायदा चीज है। इनको बोलो कि भाई तुम और रगड़ो और रगड़ो, रगड़ रगड़ के ना खत्म ही कर दो। फिर जब लिंग रहेगा ही नहीं ना रगड़ने के लिए, तब देखेंगे क्या होता है। हम्म। और देख, और यही नहीं, मैं ये तो एक बात हुई। हमारे देश में जितना पैसा मंदिर में खर्च होता है, उतना पैसा मेरे कम्युनिटी पोस्ट है, आप चेक करना, हेड्रियन, वी आर ए नेशन ऑफ स्टैच्यूज एंड टेम्पल्स। टोटल 32,705 करोड़ इतने सालों में हमने खर्च किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग बहुत रक्षित, आपने सुना है एक कोई मूवमेंट है, फ्री द टेम्पल फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल हाँ, मूवमेंट? वो कुछ नहीं, ब्राह्मणों को पैसा चाहिए इसलिए है, और कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली नहीं, गोल लेकिन यही क्या है। इसमें कोई सच्चाई है कि जो जो फॉर एग्जांपल जो चर्चेज या मॉस्क्स हैं इंडिया में, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है? देखिए, गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। टेंपल को डायरेक्टली इसलिए करता है क्योंकि ट्रस्ट बना है। पहले क्या होता था, बहुत लूटते थे पंडे पुजारी, भीड़ आता था, लूट के नाम पे हर चीज में पैसा ले लेते थे। तो ठीक है, एक ट्रस्ट बनाया गया और एक कानून बनाया गया कि क्या सारे टेंपल गवर्नमेंट के अंदर होंगे और थोड़ा रेगुलेशन होगा, ठीक है। अब रही बात मुसलमानों की, एक वक्फ फैक्ट है। वक्का फैक्ट ये है कि अगर कोई बोर्ड करता है तो गवर्नमेंट के अंदर, या जो जो सिविल सर्वेंट्स उनके अंडर ये चीज होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर ना हो करके। तो लेकिन तो बाकी फिर ये भी, हाँ। तो क्या ये भी हाँ, कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है तो फिर वो ट्रस्ट के थ्रू इनडायरेक्टली सिर्फ टेम्पल और मॉस्क और चर्चेस को भी कंट्रोल करता है? हाँ, ब्यूरोक्रेसी या में थोड़ा या फर्क होगा, लेकिन या हर डेफिनेटली। हर अच्छा नहीं, उन्होंने तो ऐसे बोल के रखा था कि जैसे कि मस्जिद और चर्चों को तो मतलब फ्री छूट दिया हुआ है, लेकिन टेम्पलों को पकड़ के इसलिए इतना गंदी तरीके से रखा हुआ है, इसीलिए आज हिंदू खतरे में है, तो सबसे पहले टेम्पलों को आजाद करो। हिंदू 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 बहुत बड़ा खतरे में है भाई, इसलिए खतरे में क्योंकि तुम टेंपल के अंदर बहुत सारे लोगों को घुसने ही नहीं देते। और तुम टेंपल के अंदर भी तुम पैसे जो है एक कंसंट्रेट कर देते हो, कंसंट्रेशन ऑफ मनी। पहले तो टेंपल के आसपास दुकानें भी नहीं होती थी बेचने के लिए, फूल बेचने के लिए ढंग का नहीं होता था, दुकानें भी ठीक से, वो भी एक्सक्लूडेड था। आज के टाइम जब ट्रस्ट बनने लगी, बोले कि ठीक है तुम अपना बिजनेस खोलो, यहाँ पे तुमको भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा ट्रस्ट के थ्रू, लेकिन तो तो थोड़ा फिर हद ये तो, तक इकोनॉमिक तो आया, वो इनको नहीं दिखाई देता है। नहीं लेकिन तो फिर ये तो बेसिक चीज है। आप क्या मिडिल ईस्ट में चले जाएं, क्या बोलते हैं, टर्की में चले जाएं, वहां पे भी जितने भी मस्जिद हैं, चर्चेस हैं, वो सब भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के थ्रू, थ्रू ट्रस्ट और अदर हाँ ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें तो कोई नई हाँ। बात नहीं है ना इसमें। ठीक है, शायद चर्च और मस्जिदों को थोड़ा छूट दिया गया होगा इन इंडिया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो सीन ही अलग है, वहाँ पे प्राइवेटली रन चर्चेज और मस्जिद होते हैं। लेकिन ओवरऑल तो ये वेरी सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें वो हाँ, लोग ऐसा रोते हैं, ऐसा उन्होंने तो ऐसा आइडिया क्रिएट किया है कि हिंदू प्रीच नहीं कर पाते हैं, सही से वर्शिप नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते गरीबों को बांटने के लिए, इसलिए वो मिशनरीज आके क्रिश्चियंस बना के निकल जाते हैं, और फिर पे हटाओ भाई, गवर्नमेंट कंट्रोल हटाओ, ये नेहरू सेक्युलरिज्म सेक्युलर लोग डिस्ट्रॉय कर चुका है ना। मैं बोला ये तो सेंस ही नहीं बन रहा है यार, ये तो लॉजिकली भी कोई सेंस नहीं बन रहा। हाँ हाँ हाँ। Hello, अच्छा, यहाँ पे am I audible? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। Yeah, can I speak in English, right? You can speak in English, in whatever language you're comfortable you can speak. Yeah. हिंदी में भी बोल So, सकते हैं आप, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप। okay, yeah, I am from Odisha. I am not that fluent in Hindi, so I will speak in English. Okay.
It's Hmm. all right. Yeah. So my Okay. point is like Hadrian, right? So Hadrian said, Hindu temples, every religious institution that we say of churches and mosques are under government control in any ways, like in bureaucratic ways or directly under government control. He want to say that point, right? You want to, No, I wanted to say no. Hello? Yeah, yeah, yeah. sorry. I wanted to say that in the Muslim countries that I lived in, and even in Christian countries, there is sort of a government control on religious institutions. I don't know specifically about the conditions of India, which is why I asked Rakshit, is how when Hindus say that the temples are under government control, what do they exactly mean by it? Does it mean that the temples don't get to use their funds the way they want, so they can't go out and help the poor, or they cannot donate, and because the government is controlling the finances, and that and like before I just so that I know, are you a Hindu? Yeah, I am Hindu. Yeah, so Robin, I Robin, wanted to know. Robin, Robin, Robin. I posted one link. Okay. Now, most of this controversy, that temple free, all that, it's all done in रक्षित मैं comparison रक्षित with सॉरी Wakaf टॉपिक board. You मैंने can ये read आपसे the सवाल entire पूछा था, thing लेकिन of आई हैड Wakaf नो board thing. इंटेंशन टू चेंज द टॉपिक टू टेम्पल कंट्रोल. ये Yeah, मेरा yeah, बस yeah, एक yeah. Yeah, रिगार्डलेस but वेदर yeah, देखिए मुझे जाना पड़ेगा अभी, तो मैं क्विकली एक बात कह दूं, अगर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द टेम्पल्स आर इन कंट्रोल और नॉट इन कंट्रोल, टू मी इन द एंड इट स्टिल डजंट मैटर. Okay, yeah. I don't think any religious institution should be controlled, but the problem is not the control itself. The problem is the religious institutions, religions, culture, and tribalism, right? but 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 I just that's a wanted to know different thing, this. no? That's a different thing. You're against a religion, I understand that, okay? But in this context, the the Hindu temple institutions are being controlled. The Muslim, their religious places like mosques and madrasas, they are not taxed. Okay, they are 100% tax free. Okay, whereas the government had made, and what we say, something sort of committee and all to decide what should be done to the funds that are collected from Hindu temples. And as you can open any article, you can read that Hindu temples generate a lot of revenues, that they are visited a lot. You may have against any religion, but you have to accept that yes, they generate revenues and they contribute some percent Yeah. to Indian GDP, Yeah. right? So here's my opinion on that. If the government is only taking taxes from the temple and giving the churches and the mosques a free pass, then I oppose that. Then I would say that they should take taxes from all the religious institutions. Because Yep. if you're generating revenue, if you're generating money, you have to pay taxes. It's a big controversy in America as well, and I honestly support that, if that each and every government should oversee, they should have a body and a trust to supervise the religious institutions, and the public should have complete information about how those funds are being used. But then again, like I really have to go now. I did not wanted to change the topic to whether the temples are under control or not. Yeah, yeah. My only thing I Yeah, wanted the to know topic is, was about religion, superstition, and culture. yeah. Temple already, I'll go to listeners. Rakshit, you yeah, continue. yeah. Yeah. So Okay. what was the debate about, right? Religion, superstition, culture. Okay, Hmm. so what are you means what is the essence of the debate? What are you saying that is responsible behind these superstitions and what culture you are talking about? Religion virus. You didn't probably hear. What I said is, in any society, usually how religion comes into existence is like this, okay? It starts as Okay. a behavior, repeated behavior turns into a habit, repeated habit expands into a group of people, and that becomes cult. And that cult, when it expands to the entire geographical area, it becomes culture. And when that entire culture starts to go into other country and other territories, it becomes religion.
Yeah, but we have to make a distinction between a superstition and a culture, right? We cannot mix both. We have to make a If the distinction foundation, between. if the foundation of the very culture is superstitious, then what to do? If the foundation is itself that you're this because your past life was like that, today you do this, tomorrow it will like happen like that, or things like you do this, you go to, after that you go to this place or that place, you don't do this, after that you go to that place. If that is the abstract concept, okay, and that concept Yes, doesn't hold any truth to it, then that is but superstitious. And how do any you know it behavioral, doesn't hold any any truth to it? behavioral pattern emerging out of that is always going to be, superstitious, whether you call it a culture, whether you call it a religion. So you are saying unless something is proven by science, it is superstition, right? Unless it is proven by objective reasoning. Okay, not even data, objective. Okay, Objective reasoning let's and add data, data. yeah, Okay, data is sorry. also there. Yeah, Objective reasoning to an extent takes into account data as well, yep. statistics, okay. So But objective reasoning is first level, data comes second level, vice versa, you take it that way. yeah. So I am saying, how do you know there is, this is superstition? Let's say about heaven and hell. So how do you know? Although I don't believe in that, but still, how do you know, like 100% that there is no heaven or hell? I'm just asking. Okay, if heaven and hell existed, okay, really, Yeah. I mean in real sense, right, world's Okay. population would not have been growing, first of all. Exponentially, it would have been dwindling, actually. It should have been dwindling. And if you imagine reincarnation to be really true, as some people believe in the, Buddhism, Jainism, Hinduism, Sikhism, call it whatever, in the Indic belief system. If it is really true, your population would not change. I mean, let's say 2000 year back, one maybe 2000 were people, human beings, okay, rest or animal, blah Okay. blah blah. But what is happening today? Today, all other species are becoming almost extinct, and only humans are there occupying, destroying forests. In fact, population is increasing even more now than ever. We are already cost 8 billion, and it is predicted to touch 10 billion, 9 billion plus going ahead. So, if reincarnation was really the balance and the foundation that you do anything, and that will determine whether you will be born an animal, a plant, or a human, or some other form of a family, or somewhere, doesn't matter, okay? Then Okay. the population should have relatively remained same, constant somewhat, okay? Because everybody does Yeah. bad, everybody does good. If that is the real karmic thing, that statistically also that doesn't, put anywhere else. And you look at it this way, you have the idea of immortality of soul. Now immortality of soul is not that it is there only in Indian religion, in Abrahamic religion also it is there. Only difference is their reincarnation is not there, here reincarnation is there, that's it. But Okay. otherwise immortality is there, soul, they call it different name, okay, that's the only thing. Now how do you know that soul is there? Exactly, the way we know biologically is, uh, when a sperm and an egg fertilize, and a baby is born. It can be anything, it can be transgender, it can be, you know male, female, Yeah, yeah, I that I understand. don't You want to go don't into have that, to but go it a that baby deep. is born, okay, we know fertilization Okay. happens. Let's go by the very, dharmic concept of, soul, which essence is, a soul enters the body, whether you go by Gita or whether you go by any other shastras, okay. Where does it enter? Whether it enters the sperm or whether it enters the, egg. If it enters the sperm, okay, then Okay, what but do you say? Whether it my enters the I am egg, saying, I what am do you saying. say? Yeah, So but this is it's not the debate, absurdity, right? right?
Yeah, but this is not the topic of debate today, right? So I am saying we But this can is talk superstitious, about. right? Like when the And foundation is until you superstitious, said right? it right, until you cannot, you have not proved it, it's not right or it's not wrong. No, End I'm of the not day. proving. I'm just keeping an argument here. Yeah, I understand, but s- still it is not proven, right? There is no atman or soul. Okay, let's say assume okay, maybe you take an agnostic position. You take an agnostic position. We don't know. Let's say हमको नहीं पता आत्मा है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है. Okay, you are only left with two options. Either you stick with the existing whatever belief, or you say since we don't know, why not go and try and find new things or look forward to newer ways of living. If it means studying or taking interest in the latest trends, let us take interest in that and move on. That could be an Yeah, option. Okay. see, we can have this debate, but let's make a common ground, right? That we cannot know if there is God or there is not God, right? You can assume there is no God. You can, give your probability that there is no God, but you cannot certainly say there is no God, or I cannot certainly say there is God, right? Can we agree on this? Yeah, you I can would question say human beliefs. You can question human beliefs. Okay. okay, fine. So if you want me to take an though I directly say there is no God, but if you would like, I can take a position of say agnostic atheist. Okay, I would rather not believe in God till it's proven that God exists. Yeah, We can yeah, come to but that. that Yeah. Oh, still fine. steals. Let's Okay, hang on, okay, go on. hang on. Let's look at okay. Let's I say I'm agnostic atheist. Uh, I would if I get sufficient evidence, then I might consider that God is there. Until then, I don't know. God does not exist. Probably that is my probability, most probability. Okay. Now let's say uh, so you are debating. You suppose you keep a position or you represent some position that say God exists or say some person, some supernatural power exists. Okay. Okay, Socially, it would make it more absurd that why would that supernatural power give 5,000 plus religion instead of just giving one message in different language? Why would you have different viewpoint and each fighting over the same thing? And it would be even big of an absurd that you have billions and billions of galaxies, billions, not one, okay, billions, okay, galaxies literally coming out. I mean, they are expanding and the universe continues to expand at the accelerating pace. And out of all the galaxy, you have a Milky Way galaxy. Out of all the in the Milky Way galaxy, you have billions of stars. Out of all that billions and billions of stars, you have one sun. We call it a sun. And out of that sun, you have say 9 planets, and you include dwarf planets as well. Out of all that, you will have life only on Earth. I mean, it would be rather insult. It's like an insult to even believe that type of God. अगर आप गॉड को बिलीव करके ये बोलोगे कि उसने बना दिया तो ये इट्स लाइक एन इंसल्ट. इट विल बी सबसे बड़ा yeah, but इंसल्ट I am not इनडायरेक्टली. saying I am the only I'm being not in this talking universe, about right? you. I'm not talking about you, but I'm just talking about the people who have that belief. See, It's man, a kind of there are, absurdity. You can understand that. 8 billion peoples in the world, and you may come across 6 billion opinions. If we count every opinion, then we may die in that process. So Hang we on. So hey, here is the other cool thing. Okay, here is one more cool thing. Here is one more thing that I would like to say. One more simple way to look at it. Okay, yeah, we evolved from forest dwelling people to agricultural society, and based on the accumulation of land, we needed to create certain myth, and probably that led to behavior, habit, culture, and now religions, whatever we have. Okay. Now the real question is, we live in a very computerized world.
No, hardly is there anybody who doesn't use smartphone or a computer or doesn't use internet, but we all use that. Okay, wouldn't Okay. it be a better argument to keep? Hang on, why are you believing in somebody who said thousands of years back? That was probably his opinion, individual opinion. I mean, you said 6 billion people has 6 billion opinion, individual opinion. Maybe that was their individual opinion. What is your individual opinion? Yeah, If you are believing like that, I said, wouldn't that be better? no, I no. mean, wouldn't that be better Listen to me. argument Listen to to me. keep to all the religious organization and even followers or people for that matter? You can agree to someone's opinion, right? You can disagree or agree to someone's opinion. It's not like you have to hold your opinion until you die. Okay, I didn't say agree or disagree. Here is the thing. When I say, I clearly mentioned there are people who believe. I mean, they literally confirm. Just before you came, I was talking about confirmation biases. I mean, somebody who believes in a text doesn't matter. He will even try and show the Western toilet in their text and say, "Look, we built this, we built that." I'm talking about that type of thinking Yeah, but where it this exists. you are talking is a humanly nature, right? I can show you people that believe alien came to their house. That's a nothing to do with any religion. What can we do with people that believe things that didn't happen, or we say we cannot prove it at the end of the day, right? God exists or not? Are we the only peoples in this universe? Yeah, maybe down the line if someone came, that's good or bad, we don't know, but until then we cannot say anything, like Okay. Okay. 100%. Okay. Okay. I got your fair point. Let's keep your fair point. I wouldn't say your position is too bad. I mean, you are keeping an agnostic position, well and good. That's also welcome. That's not an issue. But do you agree that most of the things, when crimes are done in in the name of religion or in the name of some supernatural entity, there is a kind of complacency in the society. Either it tends to ignore, or it tends to look in the binary lenses, or it tends to just try and justify or sugarcoat things. Do you agree on this point at least? See, yeah, I Okay, would like to quote a you different want to point. have an opinion or I keep that, that's well and good. You may not but believe but I in have God, to but define, right? I have to define if I okay, was okay, saying yes or no. So I okay, believe this yeah, fine, go stems ahead. from identification issue, right? If I identify myself with an Indian, if tomorrow an Indian caught abroad doing an absurd thing, like maybe it's rape, robbery, murder, I will sympathize with him a little bit, maybe somewhere down the line, little and all, but I will. Okay, it's not only because religion, every it's in human. As we know, human is in herd society, herd animal, we say it a lot. So yeah, it I believe it stem from identification issue, that I identify the same with the person that is on the pedestal now, so I have a soft corner for him, right? It is seen to the lowest of the lowest identity, like from a village, you are from a village, you will sympathize for a villager, for your own villager, right? Maybe Hmm. let's get out of this Hindu Muslim thing for a second, and sorry, not Hindu Muslim, religious thing. We do identify with our own people, that we like to say our own people, because we have this identity link bias, what can we say? So that point I would say it's not necessarily from the religion, but it have to do something with this identity biases. Okay, fine. Okay, I understood identity bias, but uh, my point was, see, you look at country like, I mean, you if you have seen my hashtag, I don't usually tag any Western country. I only tag the countries maybe in and around India and subcontinent. Okay, more often than not. Okay, Okay. let's be coming to that point. Uh, the common problem that has somewhat existed and continues to exist is the complacency of the mob. I don't know to what you talk about individual thinking. That's great. You say 6 billion people, 8 billion people each have opinion. Great.
that's something to hear wonderful. But more often than not, what happens when you look at, the mainstream media, or when you look at, how the politics is done, okay, it doesn't go at the individual level, it goes at the community level. Okay. And what is the dangers of that? The biggest danger I do see is that there is a sacrifice of individual rights. I mean, if I talk about a community, okay, and I say Okay. there are certain things I do for the community, but that doesn't necessarily satisfy the individuals of that community, right? Okay, community as a whole, as a body, maybe it gets satisfied, but not as an individual, right? Okay. So, one needs to keep that in mind. That's the whole point of discussion as well, to bring this thing out. And you just now admitted about the individual right. This is the very thing I wanted to hear. Okay. So that this is where my emphasis always is, that when you come to identity, a single person doesn't have one identity. It has multiple identity. And I have said even in previous live that you are not just a Hindu, you are not just Indian, you are an engineer, you are a father, you are a son, you are maybe having certain things to do with tribe identity exists, ethnicity identity exists. Somebody calls themselves a Punjabi, Bengali, Marathi, Gujarati, Tamil. No, you can call it whatever. Okay, we have that as well. So the question here is, it varies. As an individual, you are a composite identity. Okay. So the problem where I say when fundamentalism come, and when I say fundamentalism, usually though I discuss religion more often than not, but obviously you can include language, you can include ethnicity as well. See, Sri Lanka has something of fundamentalism which is more to do with language and ethnicity. Okay. Yeah, we can see it So yeah. in So some so parts this of is where South I India say, also. That's a different issue. But this yeah, is what I you can have been generally emphasizing, agree. right? Yeah, this is what I have been emphasizing even in my previous life, that you cannot just pick one identity of a person which is itself a composite, uh, consistent entity, okay, and then say that this is what defines this thing. That doesn't work Okay. out. That's what I have been So calling out, directly or indirectly. yeah, Okay. I think, see, I think identifying with something is not wrong. You can identify them. You can perhaps says, anything. You can identify with anything. I believe it is wrong to defend that identity, you know in its wrongdoing. If you know it is doing something wrong and still you are defending, that should be Yeah. called out. Yeah, you It's see, not like, recently what happened in Manipur. You wouldn't defend it. Nobody should defend it. Anybody who is doing whataboutery or even trying to sugarcoat it, I don't know what is wrong with them. Somebody would rather call them a cynic. Okay, cynic, literally, or somebody yeah, who is having some mental issue. No right-minded person is going to defend that. Everybody has got to condemn it. I mean, what are you doing there? We live in we call ourselves emerging economy and whatnot. We have so many with so many other accolades and whatever thing, and this doesn't send a good message either, right? So yeah, obviously, messaging is pretty bad. I obviously think. when I do criticize religion, okay, it's like this. Okay, somebody, Okay. pandit or a pujari did that, okay, or some scriptural injunction promoted it. As you can see in tantric texts, many things are promoted which you cannot, right minded or a civilized person is going to take it with a pinch of salt. Nobody is going to take it, okay. But when Okay. somebody uses that as a justification and does, and there is a section which says, Array, does what about tree and tries to divert, this is where you need to kind of pull your heads around and say, hey, there is something wrong. Okay, when I criticize religion as well, I do indicate that. And it's not that I have been only criticizing, I have been trying to give possible solutions. I have been suggesting solutions as well. Okay, it's not that I just go criticize and just remain pessimistic about it. I do like to give solution. I have proposed certain ideas, what could be done, what could be tried out.
Okay, you and I can certainly agree that Article 295A blasphemy law is something of a draconian thing. It should Yeah, probably not yeah. exist in today's It time, right? should see, but to certain degrees, it is necessary, right? In today's Then India, then to then certain then the degree, it real is necessary. then you are when you say that it should exist, then it comes to a matter of interpretation. What word or what statement of mine are you going to interpret that it is hurting the religious sentiment? Yeah, That's yeah. going to come You into cannot. question, right? Yes, I And am when you saying. talk I am about saying. Let religious me let me sentiment, prove it. what would that person who files the case, what does he define as the religious, right? Yep. That I also can I matters. can say I got emotionally, broken down by anything, and we cannot prove it. I understand, but see, I would like to give the example of that Nupur Sarma thing, right? Hmm. So that extremism per se, we cannot, you know contemplate. We cannot calculate these things, right? Nupur Sarma said something on Yeah, TV, okay, I and got your point. I got your point. I mean, you look at what happened with Charlie Hebdo, Salman Rushdie affair. I get that point. no, no. That there is no denial in uh, that. Okay. Hi, while. Wouldn't you think that it's like a child who was never exposed to exam, you are trying to shield a child to exam, and when they are come to 12th standard they fail badly and they start shouting and they start breaking the house. You would rather want more exposure to such thing where a society over a period of time becomes desensitized. You would rather want. Yeah, but you don't it want should you be a don't step want by step billions process, annual right? parties, right? Hmm? Yeah, that's why I'm saying it should be a step by step process. Imagine burning Quran. That should not be done. I don't believe it will do any good. Okay, but imagine burning something. What will it will do to India? Will it desensitize? What? Sorry, I forgot the Okay, word. I got your point. Desensitize. This is Yeah. hang on. But okay, fine. Let's say nobody takes a dramatic step of burning Quran. Let's say in India, okay, somebody has got concern and they don't take that extent of Yeah. dramatic step See, to burn Quran. we Hang on. Let me complete my point. But okay. do you agree that when there are people who do criticize religion, there may be many ex-Muslim or there may be many ex-Hindus, ex-Christian. Do you agree that on them as well there has been attempt by fanatics to use this law? Though they are not saying anything different, they are just quoting the scripture, nothing else. But that is Yes. interpreted. See, Do you think so? At least from that level, I am saying to that level, you need to come to a stage of discussion. Okay, burning this thing, I think it's very next level thing. It will take maybe longer time to understand, but at least to a position where we can discuss and criticize religion, this should be removed. That's my point. Okay. And when you yeah, but say, hang on, when I did say that religious sentiment in India with over 1.4 billion population, anything, virtually anything could be interpreted as religious. Even a caste could be interpreted as religion. A language could be interpreted as religion. Your comment on certain egoistic mindset could be religious interpreted. So that would, so you would rather want open the door of discussion, and there is like, okay, people, one thing, it's a psychology. Understand my perspective why I say that this should be removed. There is a psychological thing. yeah, yeah. When I this law I is going to be understand. removed, one thing is for sure, religious people have to come up with better argument. They cannot go around shouting. They need to prepare probably better argument. That also opens a door for Yeah, but we debates. live in a realistic world, right? We have to do things slowly. For example, I will say, like, we heard about the free speech in Western countries, right? There are, yeah, they have absolute free speech. Not yeah, absolute in a matter. They have good speech, free speech. They don't have this blasphemy laws. But was it the case before 200 years? I'm saying that. 200 years before even
the concept of liberalism was just emerging. It was not even Yeah, established. Okay. yes, that's what I am saying. See, Yeah. we got Agreed. independence All in that is agreed. 1947. But I'm suggesting here is the reason why I do suggest this thing is, uh, women will have bigger voice in this case. Believe it or not, most women don't come because they have certain psychological, phobia in their mind. I mean, something just stops them and they just don't want to take risk. A big burden comes off. You get my point, right? At least it provides women with the opportunity to come and say, you know what, this is what I find, this is what the issue is, I could raise my concern. Okay. Concern about That's what. what I am asking. Yeah, that's what the thing really No, is. I am asking concerned about what? What things? Okay. You know, when women is told like you need to maintain this thing, that thing, chastity, or maybe Muslim women is told you need to do this, you need to do that. There are various things, restriction, right? And they say like, Okay. okay, this is something which I've gone through, why not come out and say? You might have seen many ex-Muslim women who come out, but they can't show their face, they can't tell. Okay. So Yeah, what but this I am. happens is, even if they cannot come on the street, the good news is they can come in the university campus and tell that, right? That's the point. Yeah. At See, least university I campus पे तो आप लोगे ये discussion मेरा वो है. I am saying first of all, we assuming that every woman will do this? I'm not saying every woman. When I said women, I'm saying those women who have gone through or who want to share their experience or they want to raise their voice. I clearly mentioned that. I didn't say all women. Okay. While I agree, women are the most affected persons, yeah, affected group of individuals in a religion, but we can find a certain level of Stockholm syndrome towards religion Hmm. from women. Certainly, Hmm. from I have seen some interviews where Muslim women are, justifying the use of hijab and triple talaq. Why Hmm. someone should have triple talaq? Yeah, I No, agreed. And I have even seen women who like to keep Karwa Chauth only on one day. I say कि आप 16 दिन 16 घंटे का ही व्रत रख लो भाई. Intermittent yeah, fasting. But anyhow, but coming back, uh, the, see, the idea my that my the idea is not that what they do. The idea is the final goal in itself. The question is not how you do it. The question is on why you do it. The very question of why is itself the root of the problem. That's what you need to hold on to. Why? जब आप why का yeah, सवाल but पूछने see, जाओगे तो कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाएगा. yeah, but the why, see, as long as a human being is experimenting upon himself or doing anything to himself, I don't have a problem with it anyways. Right? Hmm. If he want to die, he can die. I don't have a say in anything. Okay. If he believes that Earth go around but Moon, okay, you can believe anything. The problem is when you superimpose it on me, right? Hmm. Okay, Yeah, agreed. we can. That definitely is condemnable, and I have been raising voices on that. And what I said in my channel, I have never said that कि आपको मेरे ही argument को मानना है. What I have been saying is just to bring certain logic in mind. Logic. सोचना ये important. आप खुद logic सोचो. Otherwise, I even distribute books. मेरे को क्या, मैं lecture देता रहूंगा, कोई सुनेगा जाएगा भाड़ में. ठीक है. But Okay. I'm saying you go read on your own and understand whatever you can. Okay, that's what I also suggest. Now, you Yeah. said So you just now said one thing. What did you say? Women, as long as anybody can believe and that thing. Here is another thing problem, that a belief system may not just, yeah, it generally tends to injure all, but you may injure your family members as well. You might have heard recent case in Delhi. 11 member of family just committed suicide. And what was the yeah, belief letter that yeah, yeah. their soul is going to come back, all that. Again, this very idea of
आइडिया कि भाई कुछ होता है मरने के बाद, वो जिंदा रहता है और वापस आ जाएगा. UP, you had recently somebody family who sacrificed his son, no, daughter to get a son, tantric ritual. So again, when you say religion should not be imposed on other, while it should not be imposed on other, there is another thing of religion that it can also lead to harm within the family member. आप अपने ही family member को harm कर रहे हो. You are killing a son because you want to get another son. Rituals, Yeah. ritual killing, So or that's even what I'm saying. witch hunting. Yeah. So this is another Yeah, thing but that needs to see, be highlighted. see, unlike some segregated issues somewhere in some parts of India, this witch hunting thing and this sacrifices thing are mainly and largely seen in the rural area where people are not that much educated, right? we Agreed. were Okay. you were discussing a caste You know, you know, system. you know, you know, you know. I would like to suggest one thing. There has been some report on this. You can just type ritual killings in India, and you can just see if there are report official. Uh, it's not. I don't think the recently one ritual killing did happen, and it didn't happen in village. It happened in a metropolis city, Kolkata. Okay. I came to know Yeah, from my yeah. I friend they am. did. I am So saying. I'm I just. am not saying Hmm, that it cannot happen in a hmm, metropolitan area. I am just hmm. saying it is largely concentrated to the rural area where people are uneducated, right, Okay. or Okay. Yeah. less educated. Definitely. You can say anything. Okay. Agreed. I agreed. I won't disagree hugely on that. But having said that, it would. I have shared, many news and, police report or official data from some government websites where this witch hunting does happen. The states do post a report on that. That can be looked at always to as a sort of reference, ki where and how much is happening. Okay. Having But said that, which and okay, but let me counter. Which hunting is not specific to a religious group, right? fine, you can have it, but what is the very idea of again, you can see the topic. See, I'm not putting one I religion, can I okay? can level you as an anti-Indian and I can kill you. But the word anti-Indian doesn't is not responsible for your killing, right? You are Okay. saying the concept of this witch and that all came from religion, okay, but still, right? It has the killing is done by a person for a ulterior motive. Yeah, again, I would suggest you to hear my previous live stream or maybe take some time. I have clearly mentioned most of the reasons for witch hunting is or a land issue. Maybe the more in most cases, it's seen that women are either widow or left out by their family, and they want to get the land or the house or the property, and they make up the story, and people just Yeah, I people understand. just Most of the blindly it's believe that not only stories land and do issue. it. Yeah, It actually I will go. more or less on this issue. I have said it, so that's why I suggest maybe you are coming maybe for the first time here in my channel to debate. There are so many other streams. It's not that I do talk about all these things. Only specific superstition. I have talked about Vastu, Jyotish, Ayurveda. Yeah, I but have some see, other member as well who has come out Vatsu and panel. Yeah. Vasu, as you can say, is religious. It's not harming me, right? You can design your house in a certain way, man. I don't care. You believe or not. Hmm. That's not the reason for a absurd society or discriminating society, right? I am saying witch hunting. You can give it a Okay, religious, yeah, Vastu thing, just I would like to counter one small thing, Vastu. Though Vastu may not harm anybody physically as such, but especially who is person who wants to search out for rents, who wants to put the house on a to let, right? उनके लिए problem होगा. Okay, you get my point. उनके लिए problem हो सकता yeah. है. If this was not existing, probably that idea of renting would have gone much more easily. Okay.
That's my point Yeah, here. but that's a real estate issue, right? So that's Do different thing where here real estate, we know market is complicated. अब उस मार्केट के ऊपर तुम वास्तु भी डाल के कितना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, right? yeah, but one argument is it's a little bit about human what do we say, mental health, right? If a human finds his own house where he feels comfortable, where he thinks he is safe, it has a positive impact on the environment of the home, which leads to good mental health. So if he believes if he believes in Vatsu and all, and if he got a home, then I don't think it's that much of a problem for believing in whatever it is. I don't know. Okay, so So okay, you are saying you are debating okay, about this hang on, superstition thing. hang We on. drift You're about saying it. it's hang on. It's a mental satisfaction, and it's just this thing. Wouldn't it be like a suggestion? Okay, one could try this out. Maybe somebody is listening; they can try this out. Okay, you have a one family member who believes in vastu. Tell him कि भाई आप वास्तु के according घर खरीदो. And let's say one person within family, let them have this idea that if they can try, let there be this experiment. Okay, बिना वास्तु के मैं घर खरीदता हूँ, मैं नहीं देखूंगा. I would rather look at the price and the quality of the area. Okay, quality of the Okay. area and the pricing. Okay, and then I buy it. I don't see vastu. Okay, in both cases pretty much the both are satisfied. And let's put the equation that real estate का एक market चल रहा है, price rise up and down होता रहता है. Okay, now the person who is renting out, he has a big business. It's a burden on him that somehow I need to sell the house or I need to give the house on the rent. I need to convince my client. Okay, imagine करो उसका दिमाग कितना खराब होता होगा इस चीज को सुन करके. I would rather look at from that perspective as well. Okay, Yeah, ये but तो अब I whatever don't you think said was a consumer perspective, which is okay. Understand your opinion, but you can but also business look at how to from the other satisfy perspective, who consumers, is right? rather. If you Hmm? have 80% Hindus in this country, why will you take a risk of not, you know, making a house which is not compliant to Vatsu, right? If a Muslim doesn't have any Fine. problem, Okay, agreed. All that is fine, but then the real question is कि शायद इसके बिना भी तो मेरा सेल अच्छा हो सकता था बहुत सारा. अब ये सोचो, right? But anyhow, yeah. Vastu, one of the thing with Vastu main debunking point which we discussed, it's not even so much to do with economic. Shad, you might be more off on my page, maybe in this case. I don't know to what extent. But Okay, but yeah, but my at the main end of the contention day, with you Vastu cannot is, prove, right? hang on. The main contention point with Vastu is not so much whether it satisfies somebody or not somebody. It's the claims made about it. ओके ये जो इधर उधर की क्लेम्स किए जाते मेरे उससे लेके है कंटेंशन. ओके, somebody gets satisfied, not satisfied, even that is not so much of a contention. We discussed when satisfaction comes, different things matter. We discussed just now. When you look at my Vastu's video, the main contention point is about the claims made around it. Okay, or somebody faced a problem in their house, they randomly blame it on Vastu. What if it's not Vastu? Maybe something else out of Vastu. Yeah, More but often it than is not. the essential human मैं nature, उस right? पे बोल रहा था. To That was blame the main something point of else. contention. Yeah, I am saying, but it is the essential human nature to blame it on something else. If not Vatsu, then it is on the sleepers, that the sleepers are upside down. That's why this happened. This has none to do with the lucky or Okay, what we say, so cursed so side. so 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 fine. Okay, wouldn't it be fine that okay, you can somebody in a house can look at it Vastu as well. आप उनको लगता है वास्तु मानना ही है. But wouldn't it be fine that they keep another option A, option B? जैसे क्रिकेट में होता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. ठीक है, ओके वास्तु आपका हो गया प्लान ए.
आपके सामने घर में कुछ प्रॉब्लम आया and there was some issue, some problem, and what that person did is they said, okay, this side was not proper, that side was not proper, the temple was this side, temple was that side. This blame started. What if plan B says, maybe वास्तु के बाहर का हम सोच के एक बार देखते हैं क्या है. What if it is to do with how we transact our money and how we look at our accounts, maybe just Yes, to see, curiosity. Wouldn't it be I better believe. to make the public aware of it कि आपके पास एक प्लान बी भी है, प्लान सी भी हो सकता है. See, I believe as far as 80% of the buyers have this thing on their list, but it's not the only thing on their list, right? It's not like it has to be Vastu compliant to live या there. बट होता यही है ना, जब प्रॉब्लम होता है तो क्या है, तो इट वुड बी बेटर दैट आप उसको ट्रैक, प्रॉब्लम होता है तो उसको उस तरह से ट्रैक करो जहां से आपने घर को इकोनॉमिकली बाय किया था, लैंड को आपने जज किया था, क्वालिटी ऑफ लैंड को, और आपका क्या बोलते हैं, Okay, आपका the जो point डे you टू are डे making लाइफ का जो economically. ट्रांजैक्शंस होता है आप उसको जज करके कर सकते हो. मे बी द सोल्यूशन लाइज देयर, आउट ऑफ द बॉक्स लिटिल बिट हियर. See, human beings are emotional, right? There are several financial influencers that have calculated, that have proved that buying a house is a liability, right? They have calculated it that, yeah, you can rent a house and you will be saving more money than buying a house, but the sense of security, my home, the sense of security that a house can provide cannot be fulfilled by a rented house. No, that's why people buy a house. So with this, the core thing of security and all, to buy a house, I don't have an issue with Vatsu thing if they do believe in it. You can call it a superstition and all. Maybe it is a superstition. We cannot prove it, that I have said. It's a superstition or not. But yeah, it provides some certain degree of mental, what is a satisfaction to that person, and I'm all for it. That, you know if someone buys an vasu irrelevant house, and they think about something gonna happen to me all day. Okay, I believe, yeah, let's spend Okay, 1 2 lakh more and just get here rid of is it. okay. So here is one of my perspective that while you say that emotion, humans are emotional, I well and agreed. I guess we have been emotional throughout our evolution. जिस तरह से हुए हैं, emotion is very much natural part. But the question is, it's kind of make society very hypocritical. That emotion becomes at certain stage very high for abstract concepts which we tend to make up our own. Okay, somehow out of thin air, we tend to become emotional more for that than when somebody else, maybe right in front of us, somebody else is suffering, somebody else may ask for help, we are not emotional. Somebody else, something, humans are being killed, or that we are not emotional, we just read the news, ignore and go. So it kind of puts an absurdity. I mean, it's a very question. The contention of the real question is here itself. When we talk about emotion, okay, very Okay. paradoxical thing lies here. Very contentious thing. I mean, it's very absurd that you have a dictator surround world who kill millions of people like matters nothing, but people yet fight on an abstract concept, emotional on an abstract thing. That's the absurdity and paradox which needs to be contended. Okay, I hope you got my point. But next time Yeah, when but you do, when next time you do come, make sure you watch my previous, yeah, live we it streams was videos. superstition and all. We have not talked about it because you were saying religion is a superstition which cannot be proved. Okay, so I don't believe it's I'm a not. I didn't. No. superstition No. unless. Again, even you haven't been able to. Okay. See one. The best position is okay. Maybe an agnostic position. Okay, but this could be even a better position that when you go and look forward newer things. I mean, this most religions. What are they?
they're old abstract ideas. They're not like new made ki recently aaj aaya kal aaya, uska to nahi hai. They're very old, or maybe very old. But Okay, in this so, hang on, hang society, on, hang on, hang on, everything hang on, stems hang on, from an hang on, idea, right? hang on, let me complete. I'm not running away. So what the So, main contention, why when we say atheist ki nahi hota hai, it only means to say that okay, we don't know at the best, but what else can we do? Let's look at the future ahead. Let's look at the current problems ahead, or what are the, you know, how best we can connect the humanities together. Okay, these things, that I part believe of, the you know, idea, humanity. beliefs like that idea, it gets like told as atheism or atheist. Okay, then there is another Okay. idea like agnostic है, लेकिन वो बोलता है अरे मान लो क्या बात है, मैं भी मान लेता हूँ. That becomes kind of other side. Okay, hope Yeah. you got my See, point, how it goes, even if you yeah. take an agnostic position. But I am saying I cannot blame any of this of any wrongdoing unless they impose it on someone, right? So if you believe that you are something in your Okay, own personal space, then it's okay. let's say when you come back to imposition, when a child is told about God, about this, about rituals, about festivals, or etc., 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 are you sure that child has been given enough information about all religion and their origins and a little bit of their background history? Can you tell, No, looking at the see, child? No, right? But it we is have an all ongoing grown up process, with that, right? right? We it is an ongoing process from, I mean, when the childs grow, he gradually collect data, he gradually collect all the informations that I didn't Okay, knew so you, anything when I was little, and I know it. So it would is you a would you step would by you step process, I would would rather you say. would you would you would you consider this idea of Christopher Hitchens, that what if all people were told about religion once they reached their puberty, or they were told about festivals, rituals, religion, little bit of their history, background, and their origin, about all the world religion. Okay, once they reach puberty or their adulthood, the Christopher Hitchens, what he proposed. Would you agree that we can evolve more towards that going ahead? Told me no, means what? Like you want to segregate peoples unless they become 15, 16 years old or No, I'm something not like saying that. segregate. I would rather say I wouldn't discuss so much about religion. I would rather tell them ki what you are. Okay, you are a human being and you have an individual thought. Try exploring on your own. You would rather give certain amount of freedom to even look and explore. Okay, give them But certain tools like, okay, you have internet, you have encyclopedias, you have computer, you have, uh, movies to watch. Just try exploring what you like. Okay, yeah, then see, look at their I choices. am asking, I am And maybe asking why only. if if insistence is that okay, religion is also one of the thing that should be told. Okay, like, okay, tell them, okay, these are the so many religion, this is what the social science textbooks are. Just do your own choice. Or what do you think about all this? उनके सामने Uh, एवोल्यूशन भी रख दो, उनके सामने क्रिएशनिज्म भी रख दो, उनके सामने वो रख दो, and let child, try and process it on its own, at least. okay, so I am asking why only religion? Why expose them only religion? Means why to segregate them from religion? Okay, when I say segregation, what I mean is instead of indoctrinating, you just keep it away from the indoctrination and rather look at tell them to look at religion from above the lens, above the certain होता है ना एक ग्रुप थिंकिंग, एक नैरो लेन थिंकिंग, उसके बजाय थोड़ा ऊपर से देखो. ओके, यू हैव हाउ पीपल डू पपेट शोस, राइट? वो बंदा ऊपर से खड़ा होता है और हाथ हिलाते रहते हैं, वो पपेट हिलते रहते हैं. फ्रॉम Yeah, दैट yeah. पॉइंट ऑफ But व्यू, I'm बर्ड साइड asking, पॉइंट ऑफ व्यू. believing in God is indoctrination, and believing in a religion is indoctrination. Mm-hmm.
I think Believing in a believing. God. Okay. I would rather say believing in believing in certain abstract supernatural concept. That's the root cause here, because Okay. all religion Uh, begins with that concept. okay. So I see. I believe there is wormhole, and you don't. Let's assume wormhole is an abstract construct, right? We have not seen one. We don't know if it's exist. But I don't see anybody fighting over a wormhole exist or not. They don't even care. It's to them. Like, yeah, it's exist Scientists, for me. they It's debate not for on you. that. They debate on that, scientists. Okay, even if Yeah. wormhole exists, so what? Wormhole doesn't exist, so what? They look at different scenarios. Okay, I am saying, see, let's assume God. Okay, you believe in God. Let's assume I believe in God, and okay, we both believe that a Bisleri bottle is a God, right? Let's believe it. So, will we ever fight for for a Bisleri bottle, that my Bisleri bottle is more, valuable, more supreme than your Bisleri bottle? Unless Will you ever unless fight it on? is hang on, unless it is restricted to only one individual, nobody is going to fight it out. However, when it becomes mass and it becomes culture, then they're going to fight it out. Hope you got my point here. I believe the people fight over the characterization with the characters that we give, right? There is a bottle, and when I add an diamond to a Bisleri bottle, and when you add a platinum to a Bisleri bottle, then we will fight. Oh, my bottle is Yeah, supreme then because I it have diamond become in it. then becomes an economic fight. Economic We fight will there. fight. We will get the reason to fight, right? Hmm. We will get the Again, differences. I never said you will not have reasons to fight. The main, again, you here, where is the abstract concept? The abstract concept goes off right here when you bring in the No, equation of like diamond and platinum. like I said, Platinum and diamond have a value, a market value, an economic value. So here abstract concept yeah, ends. that's I'm saying, when you say a god, when you give a character to a god, that anyways tone down its value, right? It's not god, Okay, it's my so own okay, okay, imagination okay, after okay, all. okay. Here is the thing. Okay, uh, can we have a more saner politics where we separate religion and politics and let's focus on the core issues of people, more on the economic But side? You can be economic left, economic right. That's all right, as long as it's economic. Would you agree that would be better? yeah, we can do it. But Yeah, it's I up to mean, people, right? If someone, it's like Democrat, Republican fighting over economic right versus economic left. Okay, but they do fight over trans right and all, it's right? okay. I Democrats mean, or Democrats Republican also hang on. indulge in that. But you okay? Though this is another topic of discussion itself about LGBTQ, but in India, Yeah, yeah, you yeah. agree that it's no longer a criminal thing. People are LGBTQ plus. It's At not least to agree, man. though It's there. We cannot criminalize some people just because I don't I agree. mean, now, right now, it's no longer considered criminal, and people are, though they are not legally recognized, yeah, there are LGBTQ people in our society. Yeah, right. But Again, these are social issues, but I am talking in politics. Can the debate and those things be more on economic issues? Maybe economic right perspective on it and economic left perspective on it. Would you agree that would but be better going ahead? will I get votes? The thing is, will I get vote doing that? No. The answer is no. I will not get vote. Okay, I understand it sounds very right, but it is not practical. No one will, because the general public, in general person in India doesn't understand what economy is, right? You have to first understand economy to give vote on the basis of Okay. economics. Let's say, okay, when I say economic, maybe in India term, you can just talk about household issues or maybe certain things related to market prices. Okay, maybe something related to oil prices, something like that.
economic right perspective on it, economic left perspective on it. I mean that way. I'm not saying serious economic discussion of going into per capita, GDP, investment. There are many things which is mind-boggling term and not, people are not going to get it. Okay, but you just talk about all the simple things which maybe even talked in media and debate. It conveys a simpler message. I meant that. Can we agree on Yeah, that? we can do it. I hope we Yeah. do it. Yeah. Okay. Okay. Thanks for joining. Okay. I need to read other comments. Okay. Yeah, Thanks for joining. yeah, yeah. Go. Okay. Yeah. Okay. You can educate children better, not stop them from knowing. Okay. Yeah. I partly agreed, though I did quote Christopher Hitchens in this. I think it would be better to tell them like जैसे हम एक फेरी टेल की कहानी बताते हैं उसको फेरी टेल की कहानी की तरह ही रखना बेटर होगा एंड इट शुड बी गिवन अ डिस्क्लेमर कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है मैंने अपने दादा से सुना था मेरे दादा ने परदादा से सुना था एंड ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है दैट वुड गिव यू नो बेटर bird's eye view of that understanding. The only thing you can give is a tool of critical thinking and reasoning at the best. Okay, I mean that would be uh, yeah, that's the only thing you can give. अब उसके बाद वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. कर लो. अच्छा. Slipper one is true though. There is always a fight with the believer over slipper being upside down, so it does leads to fight. Yeah, it happens quite often, not just in houses, but it does happen in even temples and even in shrines. I mean, on those issues, yeah, they keep arguing on that unnecessarily though. प्राइवेट स्पेस में कुछ भी करो कौन रोक रहा है desensitize, yeah, but we give you whole dandi march, not just pinch of salt. Yeah, this is another point. There is no creator god, that's a proof of no god. Yeah, this is another thing. Thanks for reminding this point. I should have added this. No economics at night please. Yeah, I agree. Yeah. Okay, so I would have to end the live and thanks for all the people joining. Those who haven't subscribed my channel, they can subscribe, hit the bell icon, like, share, comment. Okay, thanks for watching. Bye.